The last video we have discussed about the concept of economic development. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अभी डिटेल में हमने स्टडी नहीं किया. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ वी कैन से इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द इकोनॉमिक यानी द मटेरियलिस्टिक प्लेजर ओनली. भाई अच्छी गाड़ियाँ है, अच्छे रहने के लिए घर है, then we can in terms of we can say good privileges, extraordinary privileges, that doesn't mean economic development. So economic development is not only limited to the economic consignment only. So it is a process of social change. It's a process of social change which have many phases. In terms of we can say number one कि कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम. तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये नेशनल इनकम क्या है. नंबर वन फेज है उसका कि भाई कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. तो व्हाट इज टोटल इनकम? टोटल इनकम कैसे बनती है? तो जो इंटर स्टेट और इंटरनेशनल जो ट्रेड होते हैं उनसे जो भी इनकम होती है पूरे देश की, द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, हाउ इट इज रिलेटेड, इट इज क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ वी कैन से कि इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू विच द करेंसी इज अर्न, that is called national income. Okay, the another phase is what, that constant increase in per capita income. Now the concept is change from national income to per capita income. Increased, बढ़नी चाहिए पर कैपिटा इनकम. तो पर कैपिटा इनकम मीन्स व्हाट, कि जो नेशनल इनकम है उसे हमें डिवाइड करना है, डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी द एवरेज इनकम हमें मिलेगी. दैट इज कॉल्ड वी कैन से per capita income. If the per capita income of the country is increasing in a constant and persistent way, then we can say that the standard of living of an individual is also growing, is also increasing persistently. तो what is standard of living? तो standard of living में क्या आता है? Standard of living means in the way in which you are getting your education, the way in which you are getting your transportation, health, insurance, banking, every facilities that provided by government or by an individual for the upliftment of your life. So in which way you are getting it, that is called standard of living. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि भाई कोई ऐसा है कि उसकी पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है. काफ़ी लो यानी कि भाई 2 टाइम्स मील जो है वो सिक्योर कर सकता है. तो वो अब देखो पहले अपनी प्रायोरिटी किसको देगा वो जनरली, तो 2 टाइम्स मील मिल सके उसको देख. तो वो ऐसा नहीं कह सकेगा. ही डजंट एक्सपेक्ट अबाउट द गुड school, good transportation system. He first give priority to the food only, to 2 times meals only. So we can say easily that after independence, after making the 5th 5-year plans, economic development is taking place in India. So this is what about the concept of economic development. फिर से समझाता हूँ. constant increase in national income, constant increase in per capita income, and due to it constant increase in standard of living, that is called the standard of living. तो ये सब चेन है आपस में, ये जो कंसेप्ट है वो. If the development is there, then the national income is increased. National income is increased and per capita income is increased. And if the per capita income of an individual is increased, then it is 100% sure that we can say okay, the demand of an individual is also converted from primary facility to secondary facilities, secondary facility to luxurious facilities. So this is what, when
the income of an individual and the per capita income of an individual is increased. So this is called the stages, social phases, we can say social changes and their phases, financial phases. It is called economic development.